लेकिन अब बात करते हैं रघुराम राजन की। जी हाँ, उनके कार्यकाल में महज अब 27 दिन रह गए हैं और कल जब उन्होंने स्पीच दी एक अहम बात उन्होंने कही कि मैंने अपनी टर्म को पूरी तरह से एंजॉय किया, लेकिन बड़े बैंकर्स क्या मानते हैं और उनको उनका कार्यकाल कैसा लगा बताने के लिए मेरी सहयोगी दीपाली भी जुड़ी है। दीपाली से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपना व्यू रखा, अपना पक्ष रखा कि उनका कार्यकाल काफी उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन बाकी बैंकर्स क्या मानते हैं। दीपाली। शुक्रिया पल्लवी। इनफैक्ट किसी भी कॉर्पोरेट से आप बात करें या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट से बात करें, सभी रघुराम राजन की 3 साल की पारी को थम्स अप देते हैं। कॉर्पोरेट्स का, बैंकर्स का, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का क्या कहना है वो बताएंगे, लेकिन पहले व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अपने 3 साल के कार्यकाल में रघुराम राजन की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सबसे पहली बात करेंगे रेट्स की। सितंबर 2013 में बतौर RBI गवर्नर रघुराम राजन नियुक्त किए गए थे और तब जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो लो डिमांड का था, लो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का था, हायर इंटरेस्ट रेट, एक अनस्टेबल करेंसी, ये कुछ ऐसे क्रूशल फैक्टर्स थे जो कि इकोनॉमी पर हावी थे। लेकिन रघुराम राजन ने जब बतौर RBI गवर्नर वो कार्यरत हुए तब इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट थे वो 8% के आसपास थे और इन 3 सालों में उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स में 250 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की, क्योंकि करंट जो रेपो रेट है वो 6.5% के आसपास का है, आप देख सकते हैं। तो 250 बेसिस पॉइंट की कटौती उन्होंने रेपो रेट फ्रंट पर की है। और अगर आप मार्केट का परफॉर्मेंस देखें इन 3 सालों में, तो जब रघुराम राजन आए थे तब निफ्टी का जो लेवल था वो 5341 के आसपास था और अब मार्केट्स आप देखें तो 8700 के ऊपर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट्स में भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनके कार्यकाल के दौरान आया है। कुछ और पैरामीटर्स पर अगर उनकी परफॉर्मेंस को हम जज करें तो आप देखें रुपए की चाल आप देखिए। जब रघुराम राजन आए थे तब रुपया काफ़ी अनस्टेबल था और इस कार्यकाल के दौरान ना ही रुपए में मजबूती आई उन स्तरों के मुकाबले, बल्कि एक स्टेबल करेंसी के तौर पर सामने आई। क्योंकि अगर आप इन 3 सालों में वर्ल्ड वाइड देखेंगे भी तो करेंसी फ्लक्चुएशन दूसरी इकोनॉमीज़ की करेंसीज में काफ़ी हाई रही है, लेकिन रुपया फिर भी काफ़ी स्टेबल रहा है। 68.84 के लेवल पर रुपया तब ट्रेड करता था और अब रुपये की जो लेवल है वो 66.95 के आसपास है। तो एक रुपये के मोर्चे पर काफ़ी स्टेबिलिटी उनकी ओर से आती हुई दिखी है। इतना ही नहीं, अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े देखेंगे तो वहाँ भी काफ़ी सुधार आया है रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान। और उससे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा महंगाई दर। 10% के आसपास CPI महंगाई दर होती थी और जिसे वो रिड्यूस करके करीब 6.25% के आसपास ले आए हैं। और कल उन्होंने कहा भी कि जनवरी 2017 के जो टारगेट्स है वो 5% के आसपास ही रहेंगे। तो महंगाई के मोर्चे पर काफी राहत मिली है, जिसकी वजह से हमने इंटरेस्ट रेट्स में भी कटौती आते हुए देखी है। इस बीच आपको रोकना चाहेंगे, M&M के नंबर्स आ चुके हैं और जो पहली फिगर आई है वो Q1 के मुनाफे की है। 955 करोड़ मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। आगे नंबर्स कैसे आएंगे वो देखना होगा। फिलहाल स्टॉक की अगर बात करें तो लगभग 1.5% की कमजोरी यहाँ पर देखी जा सकती है और कंपनी का मैनेजमेंट भी एक पीसी कर रहा है। आइए सुनते हैं। After the press conference, before the analyst meet, so we have hard stop at 2:30. As we normally do, I would just give a very brief overview, and then Partha will take you through a presentation giving you both operational as well as financial performance. And then we will have Q&A. So basically, the headline in terms of financial performance is that we had a 14% growth in revenue and a 16% growth in PAT this year. Partha will take you through all the details. And this is in spite of, as you know, not having the Haridwar benefit this quarter as we did last year, first quarter. If I just go very quickly and very briefly through the various segments, industry performance, and then we'll come back and talk in more detail. Automotive, as you know, has grown about 9% in the quarter overall. And Mahindra has also grown at about the same pace. In tractor, the industry has grown extremely well as we had expected because of monsoon. In fact, somewhat better than what we had thought it would be. And Mahindra has performed even better within the industry in terms of our market share growth. Partha will give you more detail. In the truck industry, the growth has been pretty much what we had expected at about 17-18%, which is lower than what it was last year. And as we had said that we cannot have that kind of growth again this year. And again, we have performed significantly better than the industry within that. So I'll just stop here, let Partha do a detailed presentation, and after that we will do a Q&A discussion. Am I audible? Yeah, it's a mic on. Yeah, thank you and welcome to Q1 press meet. Q1 F 2017 was challenging and very interesting in many respects, not least of them because we have gone through and we are going through a new era called Ind AS. But first, just to kind of start with a few highlights and a few scene setting, what happened when we went to the analyst meet this time, we talk about that there is going to be many
challenges and opportunities in F17. The global monsoon is one of them, and the 7th Pay Commission and the benefits were the other. Brexit we thought will be a challenge, but the impact is already start to be seen now. That's an event which has happened. The sunset of the fiscal benefit, which Pawan talked about, was another one. Just to give, this was about 100 to 150 basis point impact to the bottom line. And new launches will, on the other hand, have a positive impact in terms of volumes, but a sobering impact on the margin. So that was another thing. And food inflation was there to kind of see. So, but we, on the other hand, internally had a complete product portfolio, and we are prepared with, in terms of having a full year of the launch. GST is an opportunity whose time has come. So if you look at the economic scenario, by and large, things were okay. The one thing which continues to be under pressure is IIP, but hopefully as we go forward, that also should come into the green zone. Now let's talk about the automotive sector. This quarter was good in terms of the volume growth. Our utility vehicles saw 13% growth. Our LCV, less than 2 tons, saw 45% growth, and HCV, the higher end segments, saw a 48% growth. Overall, a 10% growth. When you compare with the industry, you saw that in the PV, which is the bottom end of the chart, in the chart you can see that we grew by about roughly 12%, 11% in terms of volume growth in the PV segment, which is the highest amongst all the players, top 5 players in the industry. So it's been a very good quarter from a PV point of view. We have done well in terms of volume growth, but though the industry grew a little faster in UV, and in the LCV and the segment down below, which is the passenger goods and the HCV goods, you can see that we have outperformed the market. So overall, a very volume-focused quarter in auto. In exports, we grew handsomely, 25% overall growth, and growth, as you can see, in all the states, SNB, Africa, South Africa, all of them grew handsomely. But the one which had a very 150% growth is Australia, which stands out in terms of percentage. We also went into some new market. The launch of XUV 500 in East Africa, the launch of KUV 100 in South Africa and Nepal, and also the launch of XUV 500 again in Australia. All of them had been received very well in the respective market. Going to farm equipment sector, again, as Pawan just alluded, this quarter, a 43.9% market share is one of the highest that has been achieved by us. It is the highest ever market share for any quarter since 2007. So it's a highlight for us. The two good news here is the market is growing, and we are growing higher than the market. In terms of export performance, overall the export is a little subdued in tractor. But if you see two areas, which is SNBB, which is the neighboring countries, 94% positive growth, and Africa, 150% positive growth. So both areas have done really well. We have got some new market opened in Africa. After quite some time of flux, there is positive momentum. So very good overall. Musa, our USA, has come down, but that is not a reflection of Mahindra USA's performance, which continues to grow. It is our stock correction and our sending of tractors from here, which is reduced. Some highlights: we've had very good feedback from all of you. Our investors has rated us as in the top 2, and M&M ranks second in the best investor relations program, and also Transparency International has rated us among the top 3 in the list of 100 emerging market multinationals. So
तो आपने सुना मैनेजमेंट को अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने जो इंडिया से बाहर उनका कारोबार है वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर एक नजर डालें इनके अलग अलग सेगमेंट्स पर तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कंपनी ने बताया कि 11% वॉल्यूम ग्रोथ इन्हें देखने को मिली है। वहीं पर ट्रैक्टर बिजनेस का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, वहां से अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। इसके अलावा अगर इस क्वार्टर की बात करें तो इनके यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सबसे अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। इन नंबर्स पर बात करने के लिए अविनाश गोराशाकर हमारे साथ मौजूद है। अविनाश, सबसे पहले तो जो मुनाफे की फिगर आई है 955 करोड़ अनुमान से बेहतर है। नंबर्स को देखते हुए क्या लग रहा है आपको आगे फिलहाल, क्योंकि कंपनी ने कमेंट्री भी बहुत अच्छी करी और कहा कि आगे भी जीएसटी का फायदा डेफिनेटली कंपनी को पहुंचेगा। इन नंबर्स पर आपका पहला रिएक्शन और आगे क्वार्टर्स को लेकर एमएनएम पर आप क्या सलाह दे रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जो बॉटम लाइन फिगर आया है वो डेफिनेटली मार्केट्स की एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है। आई थिंक ब्रॉड स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन 870-880 करोड़ था, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बीट है बॉटम लाइन पे। जो कमर्शियल व्हीकल के जो वॉल्यूम नंबर्स है वो भी काफी एनकरेजिंग है और ट्रैक्टर सेल्स पे जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम आया है ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है, क्योंकि मानसून का जिस प्रकार का प्रोग्रेस है, ट्रैक्टर सेल्स अगर बढ़ते हैं तो इनके लिए इबिटा के लिए काफी पॉजिटिव बात रहेगी, क्योंकि इबिटा ट्रैक्टर डिवीजन से ज्यादा बेहतर है। यूवी बिजनेस में भी जो ग्रोथ नंबर आया है, ऐसा अनुमान है कि होपफुली सेकंड हाफ में ये नंबर और इंप्रूव होगा। हालांकि 13% कोई खराब ग्रोथ नहीं है। हमको लग रहा है कि कोई भी गिरावट में अगर ये स्टॉक मिलता है तो इसको डेफिनेटली हम क्लाइंटों को बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि नतीजे डेफिनेटली उम्मीद से बेहतर है और आगे मार्जिन भी इंप्रूव होगा। श्योर अविनाश, व्हाट्स योर टेक ऑन यहाँ पे ट्रैक्टर सेगमेंट, जैसे कंपनी ने बताया मैनेजमेंट ने बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड फार्म इक्विपमेंट जो बिजनेस है उनका 43.9% शेयर, इट इज हाईएस्ट सिंस 2007। रोड अहेड कैसा रहेगा इनका, इफ यू कुड जस्ट इलैबोरेट? आई थिंक मार्केट्स डेफिनेटली ये बात को जानते हैं कि महिंद्रा का जो ट्रैक्टर शेयर है वो सबसे ज्यादा है और क्लियरली ऑपरेटिंग लेवरेज इनको जरूर मिलेगा। इनफैक्ट जैसे मैनेजमेंट ने कहा है कि जीएसटी का भी फायदा मिलेगा, तो बोथ यूवी एज वेल एज ट्रैक्टर बिजनेस के लिए मनोज दिस विल बी अ बिग पॉजिटिव बूस्टर एंड आई थिंक इसका इम्पैक्ट आपको FY17 के बाद देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द ट्रैक्टर बिजनेस कुड सी अ गुड रैंप अप इन द कमिंग forthcoming quarter. So definitely it's a good performance and overall I think markets have definitely got a better profit number than what the street expected. So definitely you could see some sort of re-rating in the stock going forward. श्योर, बट हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़े हुए हैं। गौरांग, या क्विक रिएक्शन ऑन महिंद्रा's अर्निंग्स और यहाँ से लेकर 950 और का एक नेट प्रॉफिट का फिगर जो क्लॉक किया हुआ है, इफ यू कैन जस्ट गिव सम फर्स्ट कट ऑन दैट। तो हमारी जो उम्मीद थी उसमें और इबिटा मार्जिन जो आए हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत निचले आंकड़े आए हैं, लेकिन बड़ी निराशा नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरीके से जो माहौल है उसमें सुधार हुआ है, बारिश को लेकर के, OROP को लेकर के, 7th पे कमीशन को लेकर के, और ऑफकोर्स सबसे बड़ा ट्रिगर होगा जीएसटी का रोल आउट 1 अप्रैल 2017 से, और उसका एक सकारात्मक सा रुझान बैलेंस शीट पर आएगा, तिमाही नतीजे पर आएगा। मुझे निराशा जहाँ पर लगी है वो सिर्फ ये है कि पैसेंजर व्हीकल SUV सेगमेंट में से जो आंकड़े आने थे वैसे आंकड़े नहीं आए हैं, और दूसरी तरफ जो टू व्हीलर कारोबार में इन्होंने कदम रखा था और जो इन्वेस्टमेंट किया था वहां पर कंट्रीब्यूशन आने में काफी लंबा समय लगा है। तो वहां पर मैनेजमेंट अगर कुछ और क्लैरिफिकेशन दे दी तो ज्यादा सहूलियत हो जाती। राइट जी। ऑलराइट, इनफैक्ट स्टॉक पर अगर रिएक्शन देंगे तो लगभग 1455 के लेवल्स पर फिलहाल काम करते हुए निचले स्तरों से कुछ रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। नंबर्स एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं, अनुमान के हिसाब से तो मुनाफा बेहतर आया है। अनुमान था 925 करोड़ का और जो फिगर आई है 955 करोड़ की है, जो कि स्टैंडअलोन बेसिस पे 850 करोड़ से बढ़कर आई है।